नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर हार्दिक जोशी है एंड हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है हेल्थ। हम में से काफी लोग अपनी हेल्थ को बहुत ही कैजुअली लेते हैं एंड अपना ध्यान नहीं रखते, और जब बीमार पड़ते हैं तभी उस पर ध्यान देते हैं थोड़े समय के लिए, जब तक आप बीमार हो। हेल्थ को कैसे ठीक रखना है, ये हमारे हाथ में है। और इसके लिए हमें ना तो महंगे खर्चे या महंगे डाइट प्लान या महंगे इक्विपमेंट्स की जरूरत है। तो आइए जानते हैं कि हेल्थ को एफर्टलेसली कैसे मेंटेन किया जाए। और उसके लिए आई एम वेरी ग्लैड टू हैव माय गेस्ट मिस्टर मुर्तुजा, जिनसे जिनका एक ही लक्ष्य है, लोगों को हेल्दी रखना आखिरी सांस तक। Murtuza has more than 10 years of experience in the field of holistic health and wellness. He has a master's degree in pharmaceutical, and he has a passion to help people stay healthy effortlessly. I have known Murtuza from my college days as a passionate and a diligent student. He has been privileged to train and coach different organizations across India, Oman, Qatar, Cairo, Karachi, and Sydney. Schools, institutions, businesses, and social organizations have taken the benefits of staying healthy effortlessly, which helps their students, team, or community members take control of their health to build a life and a business they love. He consults professionals and business owners to put their health on autopilot, that is, health on autopilot that helps them feel energetic, think clear, and achieve more in all areas of their life. Welcome, Murtuza, to our channel. Pleasure to have you. Thank you, Hardik. Thank you, Hardik. It's pleasure to be here. Thank you for giving me the opportunity and inviting. And I look forward to this talk. Pleasure is all mine, Murtuza. So, Murtuza, first of all, personally, I am your big fan of your content and I follow them regularly. We would like to know, Murtuza, कि आपकी health coaching की शुरुआत कैसे हुई? So to give you a long story in a short in a short time, that मेरा ऐसा कोई विचार था कि मुझे हेल्थ को करना है. So when learning medicine, my agenda मतलब था डॉक्टर बनूं और लोगों की सेहत के लिए. बट अनफॉर्चुनेटली मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे. आई कुड नॉट गेट इनटू द एमबीबीएस और द मेडिकल फील्ड. देन आई लैंडेड अप डूइंग फार्मेसी एंड आई थॉट कि मैं दवाई बनाऊंगा और मैं दवाई बना के आई इन्वेंट समथिंग, आई हेल्प पीपल एंड आई ट्राई टू क्योर देयर प्रॉब्लम्स. बिकॉज जब मैं पर्सनली when I was growing, I was suffering from a lot of illness. मुझे अस्थमा डायग्नोस हुआ था, chronic shyness, fibromyalgia, chondromalacia, और doctors like everybody was like, you have to take medicine for the rest of the life. और जब मुझे अभी भी याद है, when I was in my teens, I think 17, 18, I was taking the same medicine. जो मेरे नानी और मेरे दादी जो दवाई लेते थे, वो दवाई मैं लेता था when I was 19. So it was those Cipla plastic rotahelor to take for my asthma. और मैं ये सोचता था कि मतलब क्यों, लाइक why do I have to take this for the rest of the life? कुछ अच्छा सोल्यूशन और होना चाहिए. I thought I will study medicine, but I studied medicine and I found out that it is helpful in terms of saving lives, emergency. But when it comes to lifestyle illnesses like hypertension or diabetes or something where जो होता है because of our lifestyle और अपनी खराब आदतों की वजह से वो प्रॉब्लम होती है. So then I got an opportunity to participate in one of the program by Mr. Murtuza Badri, with whom I am partner in the company now. और वहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि it is not just physical parameters, but there are mental and emotional parameters जो एक व्यक्ति के अपने लाइफ में होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं in terms of our health और biology और physiology. Right. So उसके बाद when I completed my masters in pharmacy, I joined him in the organization, and from then I started learning, and the aim was to identify that why do we fall sick. Because अगर मुझे मालूम पड़ गया कि इसका जड़ कहाँ पे है, so like we call it rotten fruit theory. अगर एक फल खराब है झाड़ पे, तो you cannot pluck the
फ्रूट एंड थ्रो इट, या उसका आप उसके ऊपर स्प्रे नहीं कर सकते कि ये फल अच्छा हो जाए. वी हैव टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज के उसके जड़ में कुछ प्रॉब्लम है, तभी जाके फल खराब आ रहा है. सो सिंस पास्ट 10 years आफ्टर आई डिड माई मास्टर्स, मेरा एक ही इंटेंशन रहा है टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज of whatever problems that people are going through and eliminate that, and along with that help them stay healthy effortlessly. So it's what the entire sum up. Super, super, Murtuza. So, how your own illnesses became a motivation to do all this. And whenever I follow your content, I focus that, you focus a lot on the physiology part rather than कि आप, of course, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो तो एक पार्ट है ही, बट मैंने ये भी देखा है कि आप बहुत अपनी हेल्थ को कैसे नेचुरली ठीक किया जाए या कैसे मेंटेन किया जाए, आप उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस करते हो. सो मुर्तुजा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप यू आर एसोसिएटेड विद वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्टली क्या करते हैं? Right. So the organization that I am in, so I'm a partner. It's the name of the organization is Badri Life Transformation Academy Private Limited, and the agenda is life transformation. So Mr. Murtaza Badri, who is a life and business coach, I was one of his students in his program almost 12 years back. And then since then, I started working with him after I did my master's. And now I take care of the entire health vertical. So whenever there is a problem in person's life, it could be either business, it could be health, it could be marriage, any problem. So there is a mental side of it, but there is also the physiological side of it. So like if you don't sleep well, no amount of motivation is going to help you. आप पानी नहीं पियोगे, अगर आप सोओगे नहीं, तो आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, अगर biology is not right, the psychology cannot help. So we try to combine mind and body, and the agenda is like we have been helping people from across all the ages and backgrounds. Now recently we have started focusing on helping married businessmen. ओके. और वो क्यों है, बिकॉज मैंने मेरे कोचिंग में भी पर्सनली व्हेन आई कोच लाइक वुमेन और किड्स और लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइफ प्रॉब्लम्स आल्सो, तो अगर इफ द मैन ऑफ द हाउस इज उसका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो वो ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस करता है उसके वाइफ के, उसके किड्स के ऊपर. इफ द मैन ऑफ द हाउस इज नॉट हेल्दी, उसका लाइफस्टाइल इज वेरी completely out, he comes home late, he sleeps late, then that influences the entire atmosphere in the house also. So we are now trying to focus more on helping married businessmen so that he can build the business without compromising his happiness, health and identity. मतलब मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं बिजनेस में अच्छा कर रहा हूँ और मैं मेरे जॉब में अच्छा कर रहा हूँ, बट उसके करते करते मेरा हैप्पीनेस, जो मेरा खुशी है, मेरा हेल्थ है और मेरा जो आइडेंटिटी है. Like I take this example of this movie Tamasha, in which the Ranbir Kapoor is the classic example where he loses his identity. He is earning a lot of money, but he lost his identity. So we want to make sure that you don't lose your identity, आपका health भी अच्छा हो और you earn happily what you're doing. So that's what is to help married businessmen and at large the entire family as well. Great. So, Murtuza, of course, as you correctly said, sometimes we more focuses on our physical health, and sometimes we forget that mental health is also important. And by definition of health, WHO and every big organizations or bodies have recognized कि वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ठीक होना जरूरी है, तब जाके आप ओवरऑल हेल्दी पर्सन कहलाओगे. सो यस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, मुर्तुजा, आई मस्ट से. सो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, मुर्तुजा, देर इज सम प्रोजेक्ट और मे बी यू हैव गिवन अ नेम, हेल्थ ऑन ऑटो पायलट मोड. सो थोड़ा हेल्थ ऑन ऑटो पायलट मोड के बारे में बताइए. Okay. So the health on autopilot is actually a lockdown born child. So I was coaching people, but there was nothing as such. ऐसा कुछ मकसद नहीं था कि लोग आते हैं, प्रॉब्लम है, वेट नहीं है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ये मुझे ये नहीं करना है. तो फ्रेंड है, फैमिली है, नेबर है, क्लाइंट जो पर्सनल और लाइफ कोचिंग के लिए आते थे, आई यूज्ड टू हेल्प देम. In 2018, I got a client who was this 28-year-old. He was a businessman,
and he was diagnosed with ulcerative colitis, fourth stage, grade 4. Okay. And वो दिन में 8 दवाई खाता था, उसमें से इम्यूनोसप्रेसेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हेवी डोजेज ऑफ एनसेड्स, और उसका बेसिकली लाइफ वाज जस्ट कॉम्प्रोमाइज। वो खाली सांस ले रहा था, घर पे बैठा था, और दैट्स इट। व्हेन आई मेट हिम एंड आई सॉ हिज रिपोर्ट्स एंड डॉक्टर्स टोल्ड हिम कि आपका कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। Okay. So when I started working with him, जब उसके साथ मैंने काम करना शुरू किया, so within a period of 10 months, by the grace of God, I was able to help him over problems. His colonoscopy reports were normal, his medications were reduced to just one, and he started living normal life. So वर्किंग उसके साथ जब लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ, तो मैंने ये सोचा कि ये आदमी जो अनहेल्दी था वो हेल्दी हो गया, एंड नाउ ही इज स्टेइंग हेल्दी ऑटोमेटिकली। Right. So if I so this there was this quote from Plato, the great philosopher Plato, उनका एक quote है, और the quote was the attention to physical health is life's greatest hindrance, and that quote stuck me very hard. Okay. So it is like अगर आप हेल्दी रहने के ऊपर फोकस कर रहे हो पूरा टाइम, तो आप लाइफ नहीं जी रहे हो। Hmm. And then I started learning and researching, and I realized that the God has designed our body to stay healthy effortlessly. And the biggest example is in front of us, which is our breath. Right. So breath, we are breathing effortlessly. मतलब ब्रीदिंग लेने में कोई एफर्ट देना पड़ता, और वो ऑटो पायलट पे है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्शियसली प्रोएक्टिवली ब्रीदिंग करना है। अगर आप सो रहे हो तो भी ब्रीथ कर रहे हो, अगर आप डिप्रेस हो तो भी ब्रीथ कर रहे हो, अगर आप हैप्पी हो तो भी ब्रीथ कर रहे हो। Correct. सो ब्रीदिंग इज हैपनिंग effortlessly and automatically, and that is how nature has designed us. हार्ट बीट है, वो effortlessly ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपको हार्ट नहीं पंप करना पड़ता। क्योंकि Correct. जब आप उसका ध्यान नहीं रखते हो, तब उसको एफर्ट देके फिर मे बी doctors have to put effort to keep the heart pumping. Correct. So that's where the entire idea started, that it is not something which I am inventing, or maybe I have just given a name, but this is how we are supposed to live. Or I think in neuroscience, in the brain, there is an area in the brain, things goes on autopilot. Like आप ब्रश करते हो तो वो मतलब ऑटोमेटिक है, लाइक यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू ब्रश। अगर आप आपके घर से ऑफिस के लिए निकलते हो तो आप पहुंच जाते हो, आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि मैं कभी और कैसे पहुंच गया, बिकॉज आपको रास्ता मालूम है, एंड यू ऑटोमेटिकली रीच टू दैट Right. पॉइंट। Right. सो देयर इज ऑटोमेटिसिटी डिजाइन। सो हेल्दी रहने के लिए सोचना नहीं चाहिए कि मैं क्या खाऊं, कितना कैलोरी खाऊं, कितना स्टेप्स खाऊं, बिकॉज आवर एफर्ट should be always on these three areas, which is your spirituality, your relationships, and your work life. Okay. अगर आपका हेल्थ ऑटो पायलट पे है, तो आप ये 3 एरिया के अंदर आप अपना 100% एफर्ट दे सकते हो। हालांकि ये पूरा टाइम के भाई मैं डाइटिंग करता रहूं, या ये करता रहूं, या बॉडी बिल्डिंग करता रहूं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द लाइफ nobody is going to remember you for how many steps you ran, आप कितना भागे, आपकी कितनी बॉडी बनाई। पीपल आपको याद रखेंगे आपने उनके लिए क्या काम किया, हाउ यू हैव मेड देम फील, और व्हाट गुड वर्क दैट यू हैव डन। सो टू Absolutely. डू द गुड वर्क वी नीड अ गुड बॉडी एंड माइंड, एंड स्टे हेल्दी। द एम इज टू स्टे हेल्दी एफर्टलेसली, एंड एज यू मेंशन जब इन माय इंट्रोडक्शन, दैट कब तक हेल्दी रहूं, इट इज नॉट के भाई 40-50 साल तक, बट अपने आखिरी सांस तक। So I have this, something which I tell to all my clients, that if you are born healthy, अगर आप healthy पैदा हुए हो, तो आपका responsibility और जिम्मेदारी है कि आप, you die healthy. Right. Absolutely. And very important thing, Murtuza, you have mentioned ki spirituality and relationship. So basically, even a mental health plays a lot of crucial role here अपनी फिजिकल हेल्थ बनाने के लिए। एंड आई टोटली अग्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, काफी टाइम अभी तो ऐसा हो गया है कि कितने स्टेप्स चलने हैं, सुबह से मैंने 200 कैलोरी खाए, 300 कैलोरी खाए, एंड आई थिंक लॉट ऑफ दैट आल्सो पुट्स अ लॉट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन एवरीवन्स माइंड। सो मे बी वहां से भी इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ वो स्ट्रेस बढ़ जाता है।
कि मैंने आज 10,000 स्टेप्स चले, मैंने आज 5,000 स्टेप्स चले, Exactly. एक्सेट्रा एक्सेट्रा. या सो आई टोटली अग्री टू योर पॉइंट. सो वी वुड लाइक टू नो, मुर्तुजा, आप इतने काउंसलिंग, you give a counseling, health counseling, spiritual counseling. So what is the positive impact that you have seen in your clients after the health coaching? Spiritual, I don't know. That is not my way or domain. Right, right. So what basically the entire purpose is to help people stay healthy effortlessly. And as you asked, what is the what was the results I've seen? Now, biological results, we have seen that, people, as I mentioned about the person with ulcerative colitis, then there are people with asthma, PCOD, thyroid, acidity, allergies. So when they start taking care of their lifestyle and start changing their approach, उनका जो symptom होता है वो automatically निकल जाता है. Okay. Because I say that, if you acidity, तो acidity problem नहीं है, वो एक symptom है. अगर आपको हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ सिम्टम. तो कहीं और है. सो Right. आई हैड अ क्लाइंट हु वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर एलर्जी, सीवियर एस्थमा, सीवियर वीजिंग. एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम, आई रियलाइज दैट उसका जो रूट कॉज था वो उसके वर्क के अंदर रिलेटेड था. ही वाज Okay. वेरी एंशियस एंड कॉन्शियस अबाउट हिज वर्क. Right. So he was on a lot of allergy, lot of asthma medications. But when I explaining him that how he should approach work, how to take care of his routine, then automatically his symptoms started to go away, and he was free from all the medication that he was taking. And physical benefit, I have also seen that when जब आप अपना lifestyle चेंज करते हो, जब आपका हेल्थ ऑटो पायलट पे होता है, तो आपका मेंटल एंड इमोशनल स्टेट भी चेंज हो जाता है. So I have seen clients who have come and told me like मेरा गुस्सा कम हो गया, मैं अपने बच्चों पे भी ज्यादा गुस्सा नहीं करता हूँ या करती हूँ. आई एम मच मोर काम, मेरा फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे नींद अभी अच्छी आती है. सो एक बिहेवियर जो अगर आप अपन व्हेन वी चेंज दैट बिहेवियर, तो बायोलॉजी चेंज होता ही है, बट उसके साथ साइकोलॉजी भी चेंज होता है. लाइक व्हेन द बॉडी इज अंडर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बिकॉज ऑफ द पोअर लाइफस्टाइल और द स्ट्रेस, then no amount of external things can help you. You can take supplement, you can take all the outside stuff. But if your body is running on stress hormone, it is constantly under sympathetic nervous system, then the rest and repair will never happen, because for that you have to shut that. और जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होना चाहिए, तो आपका रेस्ट और डाइजेस्ट होगा. अगर आप कैलोरीज देख के खाते हो तो आप स्ट्रेस में खाना खा रहे हो, तो वो जो आप कैलोरी खा रहे हो वो बर्न नहीं हो रहा है और ज्यादा आपको मोटा कर रहा है और मे बी आपको अनहेल्दी बना रहा है. So yes, if you change your lifestyle and the mindset, then the result will be obvious, a better energy, better, you can say. So I have the three, the three outcome, which is feel energetic, think clear, and automatically you will be able to achieve more in any area of your life. Great, Murtuza. So we have got some gist of understanding कि कैसे healthy रहा जाए. जैसे आपने कुछ चीजें already mention की है, but Murtuza, what are some basic principles that people should follow or you usually advise to people to remain healthy? So basically हम सबको tips चाहिए to remain healthy. So to start with that, जो जैसा आपने कहा कि टिप्स, तो वो लोग क्या करते हैं टिप्स के लिए, लाइक दे सर्च फॉर टिप्स कि मुझे कुछ आप ऐसा बता दो कि मैं कुछ पी लूं या कुछ खा लूं या कुछ कर लूं तो मैं हेल्दी हो जाऊं या मेरा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाए. तो लाइक इन द कोविड टाइम्स पीपल वर जस्ट क्रेजी अबाउट, अगर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता तो किसी को लाइक नोबडी वुड हैव suffered the entire problems. But कुछ tips and tricks here, we cannot boost it. We need a sustainable lifestyle to build. Immunity build होता है over a period of time with our proper lifestyle. और जैसा कि आपने बताया कि क्या basic principle है, so I have this five. Basically the acronym is woman. So I say let woman be thy medicine. Okay. So
W stands for water. You have to drink adequate amount of water. So like, people get this wild thought, like, woman with a medicine, what do you mean? So it is not that woman. You have to take care of the woman. This woman और जो बाकी आपके लाइफ में वुमन है, आपके वाइफ, आपके मदर, आपके सिस्टर और एनीबडी अराउंड देयर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट वुमन. उसके साथ ये वुमन का भी आपको ध्यान रखना है. द फर्स्ट डब्ल्यू इज फॉर वाटर. वेरी बेसिक है. लोग पानी नहीं पीते एंड दे वांट सम मिरेकल पिल और लाइक कुछ बताओ जिससे मैं हेल्दी रहूं. God has given you the gift of water. There is no life on Mars because there is no water. So water is the most important thing. If you're drinking adequate amount of water, your brain and body will function effortlessly. O is for oxygen. And the way to oxygen is our breath. And because of our lifestyle, majority of us, अपना जो breathing है वो stressful breathing हो गया है. So अगर मैं लोगों को पूछता हूँ कि take a deep breath, तो they take a deep breath like this. Now this is in fact not a deep breath, it is a stressful breathing. So अब जब आप deep breathe करते हो तो आपका जो diaphragm है, यहाँ diaphragm से breathing होना चाहिए. So now when I take a deep breath, so my shoulder and my chest are relaxed. Oh, yeah. Lungs are not here. Lungs are here in the diaphragm. Right. So when you breathe in, you have to breathe like this. And when you see a child, और अगेन मैं जो भी बता रहा हूँ ये कोई मेरा मेथड नहीं है या मैंने कुछ इन्वेंट नहीं किया है. दिस इज द नेचर्स रूल. आई एम जस्ट collecting everything and presenting it in a way where you can understand. Right. अगर आप एक छोटा बच्चा होता है, like you have a small child with your heart. So when you observe your child, the child will breathe through his tummy, like वो diaphragm से ही breathe करेगा. Right. When the child starts growing up 7, 8, जब उस पर peer pressure आता है, stress आता है, तो वो breathing change हो जाता है. And the only way to tell your brain that all is well, आमिर खान ने खाली इतना ही बताया कि all is well बोलो. बट अगर आप स्ट्रेसफुल ब्रीथ करते करते ऑल इज वेल बोलोगे तो आपका ब्रेन डिटेक्ट नहीं करेगा कि ऑल इज वेल. Right. So when you say all is well, you have to make sure that your breathing is calm, because you cannot be breathing deeply and you cannot be stressed at the same time. ये दो चीज एक साथ में कभी नहीं हो सकती. Correct. So if you want to protect your body from the impact of stress, you have to take control of your breath. And that's the reason meditation and pranayama, these kind of techniques are so much on rise, because it is nothing but correcting your breath. Correct. So that is O. W-O. M is for movement. So one के अंदर water, oxygen. M is for movement. So I don't talk about exercise. I talk more about movement. आपको चलते फिरते रहना है. अगर आप बैठना ज्यादा शुरू कर दोगे तो your body will start to lose its ability to walk and the strength. Right. So अगर आप में चलने फिरने का, you can climb, you can swim, you can track. अगर आप physically active हो, आप में strength है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा जिम में जाने का या आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल लेने का जरूरत नहीं है. बेसिक, you can do simple सूर्य नमस्कार, सिंपल पुशअप, सिंपल स्क्वाट. बाहर जाओ, वॉक करो. और वॉक करने में भी आपको कोई नाइकी का एक्सपेंसिव शूज नहीं चाहिए. आप आपका स्लीपर्स पहन के भी बाहर वॉक करने जा सकते हो. बट वो एक ये हो गया कि मेरे पास एक ट्रैक सूट होना चाहिए, मेरे पास कोई वॉच होना चाहिए, और एक्सपेंसिव कुछ जरूरत नहीं है. सो द मंत्रा इज sit less and move more. So what you see over here is this is my standing desk. This is my laptop is over here, and so I stand and work. Okay. I don't sit and work because जब भी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है बैठने का तो क्यों बैठे. I stand and work. I make sure that I sit less and I move more. The E for eating habits. तो आप क्या खाना खाते हो, कैसे खाना खाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हो बट आप स्ट्रेस में खा रहे हो, क्या आप टीवी देखते देखते खाना खा रहे हो, you are not 100% focus on the food while eating, then it is going to create problem. Absolutely. So that is an important element to be taken care of कि आपका जो eating habits है, they are properly aligned. When you eat, how you eat, what you eat, simple घर का खाना खाओ. और the last N is night sleep. If your sleep is compromised, ऊपर का कोई 5 नहीं, आपको ऊपर का 4 कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा.
because all the repair, maintenance work happen in sleep, and sleep is the most neglected. बिकॉज किसी को डाइट चाहिए, किसी को एक्सरसाइज चाहिए, किसी को कोई सप्लीमेंट चाहिए, बट सोने का बात करो तो मुझे नेटफ्लिक्स दे दो, हॉटस्टार दे दो, सीरियल दे दो, आई वांट टू stay awake, I want to entertain myself at night, and then I expect to get healthy with a diet, which is not possible. So the night sleep is, I say, the foundation. A great So that Murtuza. completes woman: water, oxygen, movement, eating habits, and night sleep. I'm sure we all will remember this women, and it is very important and a crucial point that you have given to us. And thank you for that tips. Rather than a tips, it's a mantra, I would say. And I hope everyone should remember this by heart now. So, Murtuza, what is a message? Uh, okay, so what is a message to young audience to remain healthy and why they should stay away from the junk food? Okay. So the especially today's teenagers and youngsters, when I coach clients, I've seen that जो youngsters है 18 साल के, 20 साल के, वो ज्यादा बीमार है अपने पेरेंट्स से. They are much more sicker and they are much more older. Okay. और there is a terminology which is called as calendar age और biological age. एक एज है जो आप पैदा हुए हो, suppose you are born in 2000, so you might be 20 years old, let's say 22 years old, but वो आपका calendar age है. There is something which is called as biological age, which is the age of your body. So I had a client, वो 21 साल की थी, बट उनका बायोलॉजिकल एज था 48 ईयर्स. तो वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा ओल्ड थे. So the reason to take care of your health is to make sure that you always stay young and healthy. And why? Because Bill Gates was asked this question that what is your biggest fear? उनको ये सवाल पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है? The billionaire Bill Gates replied that my biggest fear, मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि I don't want my brain to stop working. Right. उसने ये नहीं बोला कि मैं मेरा पैसा नहीं चला जाए या माइक्रोसॉफ्ट बैंकरप्ट हो जाए या ऐसा वैसा नहीं था. बिकॉज जब तक आपका ब्रेन एफर्टलेसली काम कर रहा है, आपका फुल बॉडी काम कर रहा है. अगर आप जंक फूड खाते हो, आप रात को सोते नहीं हो, यू इन्वॉल्व इन बैड हैबिट्स, एडिक्शन एंड अदर स्टफ, वो डायरेक्टली आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करता है. और याद रखो कि हार्ट ट्रांसप्लांट है, लंग ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, कोई ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं है. Correct. You have one brain and you have to protect your brain because वही आपका करेंसी है. Right. और आज के डेट के अंदर, टेक्नोलॉजी के डेट के अंदर, जो भी काम वी आर डूइंग इज नॉट वेरी हार्ड वर्क in terms of physical. Everything is using brain. So this act, this video that we are doing, it is all operated from the brain. The brain is processing everything: learning, reading, writing, coding. You take any activity, if the brain is not working, then it is not going to give you anything. So protect your brain when you are at this age, and make sure that your brain is helping you succeed in all areas of life. So for yourself, for your family's sake, and for the greater good, take care of your health, stay away from unhealthy processed food, and take care of the woman. Great, Murtuza. So quickly, Murtuza, we would go to our next segment of our chat, that is a rapid fire round. So just quickly tell us whether it is a myth or it is a fact. Okay. So we have heard that dieting is the way to lose. मतलब क्या dieting करने से ही weight lose होता है? Is it a myth or a fact? No, it is a complete myth. You have to take care of the lifestyle. अगर Okay. आपका habits ठीक नहीं है, तो you will not lose weight. Okay. Second question is fitness health equals to going to the gym. Is it a myth or a fact? Again, it is a myth because, as I said, that fitness is not linked to a particular thing. It is your own strength. So there are three S. So there are three parameters of fitness. One is your stamina, one your strength, and your flexibility. अगर आप में स्टेमिना, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब आप यू आर डूइंग गुड. आपको कुछ जिम जाने का जरूरत नहीं है. आपको किसी को दैट इज बेसिकली कमिंग बिकॉज ऑफ फोमो.
everybody is going, everybody is making six pack. आपको बनाने का जरूरत नहीं है. अगर आप भाग सकते हो, आप में स्ट्रेंथ है, आप फ्लेक्सिबल हो, आप जाके ला सकते हो, आप सीढ़ी चढ़ सकते हो, आपको थकान नहीं लगता है, आप हाइकिंग कर सकते हो, so then आप physically fit हो. That is more important and not the body weight or going to gym. You राइट, can go to gym if you want to. I'm not saying कि नहीं, but वो measure नहीं है fitness का. You can go if you want to. You have time, you have money, go. राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज, मुझे कोई डिजीज नहीं है मतलब मैं हेल्दी हूँ, सो देर आर नो साइंस एंड सिम्टम्स, सो यूजुअली वी परसीव दैट मुझे कोई डिजीज नहीं है, तो इसका मतलब मैं हेल्दी हूँ, सो इज इट अ मिथ और अ फैक्ट? Absolutely, it is a myth because the definition of the health also says that the health is not absence of disease. So it is not just कि भाई if I'm disease free, I am healthy. So I have a complete parameter which I have created. So if you visit healthonautopilot.com, there are video series और उसके अंदर I have created a complete chart to help you identify कि आप कौन से health के stage में हो. Like, are you really staying healthy effortlessly? Or so there are four stages: stage 0, which is autopilot stage; stage 1, stage 2, and stage 3. Majority of us are in stage 1 and stage 2. And I say this that if you are not staying healthy, तो आप automatically unhealthy होते जा रहे हो. मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तो कुछ भी खराब नहीं कर रहा हूँ तो मैं हेल्दी हूँ. नहीं, वैसा नहीं. राइट, So a simple, just to maybe if you have time, simple test is like that if you fall asleep in less than 5 minutes time, people think कि ये मेरे पास वरदान है, मुझे कभी भी कहीं भी आसानी से नींद आ जाती. तो वो वरदान नहीं है. That is a problem because your body is sleep deprived. एक हेल्दी इंडिविजुअल को 10 से 20 मिनट लगता है सोने के लिए. ओके, अगर आप घर आते हो या ट्रेन में ट्रैवल करते हो या गाड़ी में हो या इमीडिएटली क्रैश, तो वो वरदान नहीं है. दैट इज अ साइन दैट यू आर अनहेल्दी, बट वी डोंट नो दैट दैट इज एन साइन ऑफ इल हेल्थ. राइट, वी ओनली मेजर हेल्थ विद पैरामीटर ब्लड टेस्ट, बट दैट इज नॉट what we have to do. So if anybody interested, they can get the complete evaluation on the website. राइट, सो द वेबसाइट इज healthonautopilot.com, राइट? .com. Yes, yes. Okay, Murtuza. So, Murtuza, that we come to the end of our session, and we would like to thank you for giving your valuable time to us. And once again, we are glad to have you on the show. Thank you. Thank you, Ardik. Thank you for having me. Wish you all the best for what you're doing and spreading the message to the youngsters out there and guiding them with the right knowledge, which is very very important in today's time, and not the hype knowledge. Thank you. So wish you all the best for what you're doing as well. Thank you, Murtuza.